हे एवरीवन, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन 18। ये क्या कह रहा है कि हमको एक हैश टेबल दिया है ऑफ साइज 10 इधर पे, एंड एक हैश फंक्शन दिया है, एंड बोल रहा है कि टू हैंडल कॉन्डिजन्स वी हैव टू यूज लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। तो हैश टेबल क्या होता है? हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज इट कॉल्ड हैश टेबल, and in Python it is called dictionary. So I'm sure you are familiar with this. इनसाइड ये कैसे वर्क करता है कि वी हैव अ की वैल्यू पेयर लेट से, एंड इनको हम स्टोर करते हैं किसी भी हैश टेबल में। सो वी हैव अ की, एंड इस की को हम एक हैश फंक्शन में पुट करते हैं, ठीक है। एंड ये हैश फंक्शन हमको एक पर्टिकुलर इंडेक्स देता है, ठीक है। एंड ये इंडेक्स सिर्फ एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इस की से ही जनरेट हो सकता है, ठीक है। और इस इंडेक्स पे हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ओके। सो नाउ जब भी हम इस की को एंटर करेंगे हैश फंक्शन में, ये हमको एक मेमोरी एड्रेस और इंडेक्स देगा, और वहाँ पर जो भी वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू हम वापस दे देंगे। सो दिस इज हाउ हैश फंक्शन एंड हैश टेबल वर्क्स, ओके। नेक्स्ट थिंग इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि लेट्स से दिस इज माय हैश टेबल, एंड ये इसके मेमोरी ब्लॉक्स हैं, एंड आई हैव अ हैश फंक्शन जो मुझे indexes दे रहा है। So let's say I have some things, let's say x y g, ये हमको ऐसे स्टोर करना है यहाँ पे। तो हमने हैश फंक्शन को x दिया, एंड लेट्स से उसने कोई मेमोरी एड्रेस दिया और हमने उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया जो भी इससे रिलेटेड वैल्यू थी। देन y दिया, एंड देन उसको हमने यहाँ पे कहीं पे स्टोर कर दिया, एंड लेट्स से फिर हमको z मिला। नाउ कोइंसिडेंटली ऐसे हो गया कि जो x ने हमको हैश फंक्शन दिया था, हैश फंक्शन ने जो हमको एड्रेस दिया था या इंडेक्स दिया था, और जो जेड ने दिया था वो सेम हो गया। सो दिस, यहाँ पर हम जेड की वैल्यू स्टोर करने आए, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्स की वैल्यू स्टोर्ड है। तो व्हाट वी डू, तो इससे निपटने के लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करते हैं कि हम लीनियरली मेमोरी एड्रेस में आगे बढ़ते हैं, एंड जहाँ पर भी हमको एम्प्टी ब्लॉक मिल जाता है वहाँ पे हम इसको स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्टोर कर देंगे value of z, okay. So now we know all these terms, so let's jump into the question, okay. So we have initially a hash table of size 10, so let's create a hash table of size 10, okay. 0 1 2 3 4 5 6, okay. So let's name them 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay. We have this hash table, hash table. And what is our hash function? It is, hash function is given as hx of, hx is equal to 3x modulo 10, okay. And now it is saying that हमको ये insert करने हैं इन पे 1 4 5 6 14 15, okay. इन कीज को हमको hash table में insert करना है, and the question is asking on which indices the key 14 and 15 are stored, okay. So let's start. So first we'll insert 1. तो हम यहाँ पर x की जगह 1 लेंगे, और हमारा जो भी हैश फंक्शन हमको वैल्यू देगा उस इंडेक्स पे हम 1 को स्टोर कर देंगे। तो दैट विल बी 3 टाइम्स 1 मॉड्यूलो 10, दैट इज नथिंग बट 3 मॉड्यूलो 10, 3 मॉड्यूलो 10 दैट इज 3, ओके। सो वील स्टोर अवर 1 एट दिस इंडेक्स दैट इज 3, तो हम इसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ओके। देन 4, तो जो 4 है
In same way, we'll do this 4 cross 1, sorry, 3 cross 4 modulo 10. That will give us 12 modulo 10, which is 2, right? तो हम इसको 4 को इस वन इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे. Same way, 5, 6, 14. Same way we'll do for 5. Okay. So let me write here h of 5, and let me write here h of 4, and this are h of 1. So now h of 5 will be 3 times 5 modulo 10. That is 15 modulo 10. That is 5. Okay. So 5 will go here at fifth index. Okay. After 5 there is 6. So h of 6 is 3 times 6 modulo 10. That will give 18 modulo 10, which is 8. So 6 will come here at 8 index. What next? Next is 14 and 15. So then we'll do h of 14. That is 3 times 14 modulo 10. Okay, that is 42 modulo 10. So that will give us 2. Okay, so now if you see, we should insert it at this index, but it is already full. So what we'll do? We'll do linear probing. So we'll increment it linearly. So 2 से हम 3 पे जाएंगे, which is also full. Then हम 4 पे जाएंगे, which is empty. So now we'll insert this here at 4th place. Then we'll do for next, which is 15. So h of 15 is equal to 3 times 15 modulo 10. So 45 modulo 10, that is 5. So we'll go to this index first, but it is full. So we'll do linear probing, and whatever the next empty index is, वहाँ पे हम इसको fill कर देंगे. So 15 will come here. Okay. Now what is question asking? That the indices where the key 14 and 15 are stored. So 14 is stored at 4 and 15 is stored at 6. So the answer will be 4 and 6, that is D.